Remember, CNN News 18 has been closely tracking the murder case of Ankita Bhandari, and this is the breaking news that we are bringing to you, that the post-mortem of Ankita Bhandari is over and her relatives have now left with her mortal remains. This is the latest that we are bringing to you, that the post-mortem is over. Remember, there was a huge gathering of the crowd outside AIMS where the body of Ankita was for the post-mortem. For more details, I'm joined in by Anupam Trivedi on the phone line. Anupam, if you can share the latest status of the post-mortem report. Are you learning of any details as yet? See, as of now, the family members have left for Srinagar in Garhwal district. Ankita's village is very close by to Srinagar, and the relatives told that her mother was insisting that she wanted to have a last kind of a look at her daughter. Therefore, the body has gone to Srinagar. The cremation will probably take place tomorrow, and meanwhile, the police has been deployed in the large number in Srinagar, also in the Hardwar, where the Aryas have the home, one of the prime accused in the case, and in Rishikesh as well. Because, the family members were gathered in Rishikesh since morning, and now they all have left. As far as the tensions are concerned, the tensions are quite, they have been brewing on the ground. So police are just keeping an eye on everything, and they are hoping that tomorrow when the commission will take place, the things will be settled down. All right, but since you mentioned that there's much tension brewing on the ground level, we've seen those protests happening. People are now demanding that the accused should be hanged. And yes, the BJP has expelled Pulkit Arya's father and his brother, who were an integral part of the party. But a lot of delay has happened in this case. Remember, it was 6 days ago that Ankita went missing, and after much hue and cry, and only after her parents filed a complaint, was her body discovered after a search operation. It's crucial to also highlight that the anger on the ground level is very justified. Yeah, of course, you are right that for the initial 2 days, the local authorities didn't act it. On the 20th of September, her father filed a missing complaint with the revenue police, because Uttarakhand has a dual policing system, revenue and the regular police. So the revenue police guys did not do something for the first 2 days, and on 22nd the case was handed over to the regular police, and then police interrogated the 3 of the accused who have been arrested and held, who have been booked for this on the charges of the murder of the Ankita. So the initial 2 days, the delay in the initial 2 days, this is what the locals have been demanding, why it was so. That despite pressure and despite everything, why the local authorities ignored them. So this is the case. Therefore, they are asking for a capital punishment of the accused. So far, the Chief Minister has repeatedly said the government is doing its course. Law will take its own course, and the government will not pressurize on anything, on any influential people. How big is the person? We will not let anyone go like this. The Chief Minister has assured the crowd. Absolutely, Anupam, which is the next question that comes to mind, that after Pulkit Arya confessing to the crime, what is the kind of punishment that should now be thought upon? Because we all know that, he has confessed to the crime. Having said that, is the expulsion of his father and of his brother, is it enough? Is it justice delivered? Because let's not forget that the DGP has gone on record to say that Ankita Bhandari was killed because she refused sexual favors to the guests. Yeah, of course, because in the police interrogation, it was also revealed that the resort owner was asking her to give some escort kind of services, which she has strongly refused. And this was the kind of, this was the tension between the owners and the employee, the Ankita, who has been killed. So after expelling the father and the son, the BJP and the government is hoping that the things will be settled. But as I told you earlier, the initial delay in the case is something which is not convincing to the locals. And they are also fearing that their daughters and their sons, who work in numerous kind of resorts in Rishikesh and many other places, are they safe? Are they in the safe hands? So this is the question being asked again and again. Absolutely. Many thanks to you, Anupam Trivedi, for bringing in the latest. In the meantime, let's also listen in to what Uttarakhand CM had to say. Ankita भंडारी मर्डर केस को लेकर खासा गुस्सा है लोगों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसमें एक्शन की बात भी कर रहे हैं, एसआईटी जांच की बात की गई है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, सर गुस्सा बहुत है लोगों में और आप हालांकि एक्शन भी कर रहे हैं।
देखिए, जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है हमारी बेटी के साथ, गुस्सा होना स्वाभाविक है। उसको लेकर हम लोग पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं और त्वरित हमने कार्रवाई की है। राजस्व पुलिस ने उसमें कुछ देरी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, सस्पेंशन की कार्रवाई की है और भी कोई कार्रवाई होगी तो वो कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस ने जहां आरोपियों को जेल डाला है और साथ ही साथ जो ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया है वह भी हमने करी है। एसआईटी गठित कर दी है जिससे कि कोई भी पहलू अपराध और अपराध करने वालों का न छूटे, इस प्रकार की घटना भविष्य में न हो और भविष्य के लिए नजीर बने, इसलिए इस पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। वो कठोर कार्रवाई हम कर रहे हैं। बिल्कुल, अंकिता के जो परिजनों से हमने बात की, उन्होंने पुलिस प्रशासन द्वारा वो थोड़ा नाराजगी उन्होंने पहले के जो क्योंकि राजस्व पुलिस के पास जब ये पूरा मामला था उन्होंने कोताही बरती तो उस पूरे मामले में उनको थोड़ा नाराजगी उनकी देखने को मिली, लेकिन वो ये जाहिर भी है। लेकिन जब ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन किया और जिस तरीके से अब लगातार कार्रवाई हो रही, तो उससे कहीं ना कहीं परिवार के लोग संतुष्ट भी दिखे हैं। हमारी जब उनके जो बुआ थी उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने उस परिवार के बारे में भी जानकारी दी। उनका कहना था कि क्योंकि परिवार जो अंकिता का है वो थोड़ा गरीब घराने से है, तो उनका जो परिवार है वो थोड़ा उस परिवार के घर की रोजी रोटी के लिए अंकिता भी बाहर निकली थी, क्योंकि अंकिता ने एक साल पहले ही होटल मैनेजमेंट की, तो उसके बाद अंकिता घर से बाहर निकली थी अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए। और अब उनका मांगे कुछ मुआवजे को लेकर भी है कि, और दूसरा उनके परिवार के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना कि जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, उनको सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए। मैं आपको वो सीधे वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ जो आग लगी है। आप देख लीजिए कि किस तरीके के यहाँ पे जो सामान रखा था उसको आग के हवाले झोंक दिया है। भले ही इस आग को बुझाने या यहाँ पे किसी भी प्रकार का भी प्रशासन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं अंदर कितनी भयावह आग लगी है। जो लोगों का गुस्सा है वो किस तरीके से फूटा है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अपने कैमरामैन सहयोगी राकेश सावत से कहूँगी कि वो इस तरफ से दिखाएं कि किस तरीके से ये आग यहाँ फैली है। आप ये देख सकते हैं कि पूरा जो कमरा है, ये जो अंदर का जो इसमें सामान था, ये लगता है ये स्टोर रूम रहा होगा, क्योंकि स्टोर इसमें पूरा सामान भरा है। और यहाँ आग की जो लपटें हैं, यहाँ पे जो शराब की बोतलें काफी देखने को मिल रही हैं। ये उसमें पूरा आग यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरीके के इस पूरा रिजॉर्ट को आग के हवाले यहाँ के जो लोगों का गुस्सा है वो इसमें साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।